Good evening, learners. Very good evening, sir. So, domains of rural entrepreneurship. The main object of this chapter is about domains of rural entrepreneurship in different areas. What sort of that entrepreneurial activities are going on? That ongoing activities in our country prevails a large extent in different sectors. As here, after having gone through the lesson, the students, all the learners will get the idea starting an enterprise in any of the different domains like food processing at small and medium level and at rural enterprises. Potteries and clay products like forest product produce woodwork and like medicinal plant, paper industry, etc. Service sector like catering of rural people, especially repairing of television and like VCR, VCD and like mobile phone, etc. Rural tourism and entertainment like catering, allied services, rural festivals, etc. Covering the domains of rural entrepreneurship. Modern industries like handloom and handicrafts. Handloom that converted nowadays into power loom. So this is the domains of different entrepreneurial activities of rural entrepreneurship. Some of the indicative sectors may be taken into consideration for gainful employment. କୋଉଥିରେ ସବୁ ବହୁଳ ପରିମାଣରେ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏବଂ poverty eradication ହୋଇପାରିବ ଇତ୍ୟାଦି. Original enterprises created out of opportunity in supplying rural products to urban consumers and new products to rural consumers. So replication of urban experience in a rural setting. अर्बान रे जो गुडी सब एक्सपीरियंस आमे लर्न करछन्ती लोक मानकर को भली सब डिमांड अछि को भली द्रव्य प्रति गुड्स कमोडिटीज प्रति चाहिदा अछि ताकू फोकस करी करी आमे जदी अर्बान एरिया रो किछ लर्न करि परिबा वी कैन यूटिलाइज दैट लर्निंग प्रोसेस इन आवर रूरल एरिया अकॉर्डिंगली वी कैन प्रोड्यूस द गुड्स एंड कमोडिटीज एंड सप्लाई टू द अर्बान एरियाज सेही अनुसार आमे जहा लर्न करिथिबा को प्रकार द्रव्य सेवा जे अर्बान अंचल रे विभिन्न अंचल रे आंचलिक भितरे चाहिदा अधिक अछि जदि आमे सेति की लर्न करिथिबा अर्बान अंचल रु सेही अनुसार आमे गांगंडा अंचल प्रोडक्शन करि परिबा एवं अर्बान एरिया लोक मानकर चाहिदा को फुलफिल करि परिबा वी कैन अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट सो रूरल एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया one of the main aim of development policy in India to provide employment to millions of unemployed youth. India's rural economy is primarily agricultural based. So what are the raw materials production held in agricultural sector we can utilize? Income and potential and employment potential like the village and small scale industries were set up with some aim. So what are the aim? To orient the rural population, especially the rural youth, towards entrepreneurship or entrepreneurial activities. Secondly, to increase the level of earning of artisans, कुशली कारीगर जो मान सब अछंती इन रूरल एरियाज तांकर इनकम सोर्स किभली अभिवृद्धि कराइबा. So thirdly, to sustain and create avenues of self employment among the unemployed youth. Sustain, maintain for a long period of time. So accordingly, we should focus on the rural enterprise to preserve craftsmanship and heritage of the country also. So out of these different aim and objectives, we should focus on the important that rural entrepreneurship domain of rural entrepreneurship like food processing. गोटे विभिन्न प्रकार खाद्यर सब चाहिदा अछि एहा देश बा राज्य बा अंचल भित्तिरे लोक मानकर विभिन्न प्रकार खाद्य सामग्री उपरे चाहिदा सृष्टि होइथाय. सो सेही अनुसार अंचल भित्तिरे जो चाहिदा खाद्य सामग्री उपरे जो चाहिदा ड्राई फूड आमे ता उपरे मध्ये गुरुत्व देबा उचित. सो फूड प्रोसेसिंग कवर्स variety of products from various sectors comprising agriculture, horticulture, plantation, animal husbandry and fisheries,
and marine products, India is one of the major food producers in the world and has enough availability of a wide variety of food grains, fruits, vegetables, flowers, livestock, poultry, fish, and seafood. Diverse climate conditions and a long coastline has contributed to India position as a large food producer with variety. ତେଣୁ ଆମେ ଯେଭଳି ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲରୁ ଆମେ ଫ୍ଲାୱାର ଗାର୍ଡେନରୁ ଆମେ ଫ୍ଲାୱାର ଆଣିକି ଓଡ଼ିଶାରେ ସେଗୁଡା ସବୁ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତି ସହର ବଜାରରେ ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳରେ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲର ମାନେ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେ ଚାଷ ନାହିଁ। ସୋ वी कैन ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଦି ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭେରାଇଟିସ୍ ଅଫ୍ ଫ୍ଲାୱାର that is demanded in our states. So ସେଇଭଳି ପ୍ରନ୍ କଲଚର ବା ପ୍ରନ୍ ଚାଷ ଯୋଉଗୁଡାକ ସବୁ ହଉଛି ବିଭିନ୍ନ କୋଷ୍ଟାଲ ବେଲ୍ଟରେ ତାକୁ ସପ୍ଲାଏ କରାଯାଉଛି ଫରେନ୍ କଣ୍ଟ୍ରି କି। So they are earning by exporting, they are earning huge income resources. So policy for food processing. Several policy measures have been taken in the past years with regard to regulation and control, fiscal policy, export and import, and exchange and interest rate control and other incentive to increase investment in processed food sectors. The government has abolished licensing for almost all food and agro processing industries except for some items like beer, alcohol and wine, cane sugar, hydrogenated animal fats and oils. ये ऊपर सरकार को संपूर्ण भाव में टैक्स थाए किंतु अन्य फूड प्रोसेसिंग प्रोडक्ट ऊपर सरकार को हेवी टैक्स किसी एभली न थाए. So excise and import, that excise and import duty rates have been reduced substantially in food policy for food processing. Many processed food items are totally exempt from excise duty. Reduction on custom duties on plant and equipment as well as raw materials and intermediate goods are especially that excise duty and other tax has been abolished by the government of India during different time periods. So opportunity in this case, what are the different opportunities? Increased level of literacy, rapid urbanization and a rising per capita income have all caused rapid growth and change in demand patterns. An average of the Indian spends about 50% of the households expenditure on food items, which is certainly increasing at steady pace due to liberal policy of the government. 50% of our total income, about 50% we spends on the food items. So key investment opportunity both catering to the domestic market as well as for exports exist in many areas of food processing in India. Milk and milk products, meat and poultry products, fruit and vegetables. आम देश रे जेते विभिन्न प्रकार फल चाष होची तार जूस मध्य विभिन्न माने ग्राम्य शिल्पीकरण माध्यम रे आमे सेगडा को सब प्रस्तुत करि परिबा. सेति बे हम ट्रेनिंग जदि नबा तार प्रोसेसिंग टेक्निक जदि जानिबा, so we can produce huge quantity and supply to different areas so that we can earn maximum income or profit. There are a tremendous opportunity in food processing industry, especially at a rural enterprise level where all the raw material is available at a low cost. With rural youth are the best human resource available. Some of the areas of food processing industry as rural enterprise like dehydrated fruits and vegetables, like fruit based beverage, विभिन्न प्रकार बेवरेज सब तैयारी होची. हमर जो जूस सब तैयारी होची जो ऑरेंज रे हो, मैंगो रे हो बा एप्पल रे हो, विभिन्न फल रु तैयारी होची. बाजार को आमे सब पिउचंती सेगडा सब ड्रिंक करचन खरा दिने. So there is heavy demand. So beverage is essential. Fruit based beverage are released very much, particularly when served child, especially during summers. These are nutritious and healthy juice, squash, grass, cordial and syrups are popular fruit products. Products like syrups and squash of orange, mango,
lime, pineapple, grape, apple, etc. Besides, there are jam and jelly are also produced. କେଉଁଝରରେ ଯୋଉଟା ପ୍ରଡକ୍ସନ ହଉଛି ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଯୋଉ ଖରା ଦିନେ ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ପ୍ରଡକ୍ସନ ହଉଛି, ଯୋଉ ଟ୍ରାଇବାଲ ପିପୁଲ ମାନେ ମହିଳା ମାନେ ସେଗୁଡିକ ସବୁ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ମାନେ ଭିଲେଜ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ୱେରେ ତାକୁ ସବୁ ପ୍ରିପେୟାର କରିକିରି ଯୋଉଟାକି ଜାମ ଟାଇପର ସେଟା ଆଣିକି ବଜାରରେ ସବୁ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ବିକ୍ରୟ କରନ୍ତି। ସୋ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ୱାନ୍ ଟାଇପ ଅଫ ହୋମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଭଳି। ସୋ ତାକୁ ଯଦି ଆଉ ଟିକେ ଫିନିସିଂ କରାଯାଏ modern technology रे करा जिवो तो there is heavy demand for that product. So mushroom products, mushroom for example, mushroom छतु चाष करिबा, that is also one of the cottage entrepreneurial or village entrepreneurial activities. So mushroom including commonly known as ढिंगिरी mushroom ढिंगिरी जातीय विभिन्न प्रकार माने छतु चाष अछि, ढिंगिरी गोटाय प्रकार अछि, grows on a decaying tissues of plant and material under normal conditions. It is light gray in color and has pleasant flavor. So Mysore has shown that it can be cultivated easily under normal conditions of temperature within 21 degree centigrade to 28 degree centigrade आमे करि परिबा। कुटा फुटा को नेगिरी एगडा सब तार मंजी मिलुची छतुर मंजी आमे ताको झुलेई करी सब मध्य कुटा छतु प्रस्तुत करि परिबा। So potatoes product से भଳି सब अछि, potatoes आलूरु विभिन्न प्रकार चिप्स सब प्रोडक्ट अछि। Attempts to process potatoes into dehydrated products have resulted in the preparation of a flat and dehydrated potato chips. Flat dehydrated potato chips are used as snack food भाबे हमें समस्ते व्यवहार करिथांती and are consumed after deep frying in oil flour followed by sprinkling of salt, pepper, chili powder, etc. आदरे टिके टिके खाली ऐड कर देले ता टेस्ट पळि आइसला। सो पोटैटो चिप्स प्रोडक्ट हे गला। सो तार डिमांड हम तो देखुचंती मार्केट रे। कोकोनट प्रोडक्ट से भଳି अछि, जो अंचल रे कोस्टल अंचल रे प्रचुर परिमाण रे नडिया चाष होउची। सो desiccated coconut is the dehydrated and shredded kernel manufactured from fresh mature nuts, so that macaroni, fine, medium, coarse, chips, tapes and shreds. The fine and medium grades are largely exported, but it has a large domestic market as well as. So नडिया रु आमे नडिया coconut oil मध्य production करि परिबा। So it has heavy demand in the market. सेबला गार्लिक पाउडर, रसुण रे विभिन्न प्रकार सब पाउडर सब तयारी होची। आजकल तो प्राय ड्राई हमर मिली गलानी मसला जातीय द्रव्य गुड़िक विभिन्न प्रकार जमी रुचि कंपनी प्रोडक्शन कर कटेज इंडस्ट्री मीडियम स्केल इंडस्ट्री रे। सो गार्लिक इज मेनली यूज्ड एज ए कंडीमेंट इन वेरियस फूड प्रिपरेशन and also serves as a carminative and gastric stimulant in many medicinal preparation. Medicinal preparation मध्य रसुण व्यवहार होता है। जानिथिबो बोधे जदि जणे लोक सकाळु उठी खाली रसुण 5-6 पाखुडा माने गार्लिक रो केते इंपोर्टेंस अछि मु निजे अनुभव माने अनुभवी अटे। कोन जदि खाली पेटरे आमे सकाळु उठी करी हमर ब्रश फ्रश इत्यादि करि सारिला परे टिके नखोसुम पानी रे रेगुलर जदि 4-5 पाखुडा जदि जणे रसुण खाउथिबो सकाळु उठी करी 2 ग्लास नखोसुम पानी पी दोथबो, ठंडा ता लाइफ लॉन्ग धरिबो नाही। कोरोना बा महामारी जोड़ा अछि भाइरस रेजिस्टेंस पावर ना कमी गले भाइरस हम देह को अटैक करिवो। मु निजे भुक्तभोगी, बुझि पारल निरंजन? हेलो हेलो सर सर आगे आगे मु निजे माने डेली तमान से विश्वास करिवनी मु डेली सकाळ उठिबी हला आगे डेली 500 पाखुडा रसुण माने खाई देकरी नखोसुम पानी पी देबी 2 ग्लास आगे तार आधा घंटा परे गाधे पाधे इत्यादि करिकरी काम सारिकरी तापरे मु चाफा इत्यादि खाइबी। आगे विश्वास कर माने ये जो कोविड समय रे मु फ्रीली बुली पारि छी, कारण समस्त डरु थांती रेजिस्टेंस पावर जार कम ताकू कोरोना अटैक करिवो निश्चित भाव रे। आगे भयातुर होइतले
किंतु जेहेतु ए पर्यंत सुधा किंतु रसुण को जने जने पसंद करती ना जेहेतु तार गोटा स्मेल हुए किंतु पॉजिटिवली जब ग्रहण करवा रसुण मते किंतु बहुत फाइन तार जो टेस्ट टा मते बहुत टेस्ट लागे जो स्मेल टा तेणु पॉजिटिवली ग्रहण करवा रसुण एते इफेक्टिव अछि हैं पूरा रेजिस्टेंस पावर स्ट्रांगली से रखिबो बहुत प्रकार तार कार्य तार ब्लड टा को थिन करिवो पतला करिवो फैटी अंश को ब्लड जो गुडा फैट चर्बी जातीय जमा ही थाए ताकू मध्य मेल्ट करिवो ब्लड प्रेशर एवं डायबिटीज मध्य सुरक्षा पाइबो सिंपल जो आमे गाँ कथा आलोचना करछन्ती रूरल इंडस्ट्री वास्तव में इट इज ट्रू हैं एगडा सब आमे भूली गलेनी टिके ठंडा हेले दियो आना एंटीबायोटिक खाई दियो एंटीबायोटिक खाई खाई त हमर रेजिस्टेंस पावर धीरे धीरे वीक हो जाउछ ना सेल इत्यादि गडा वीक करि पके ना सेटा केमिकल ड्रग्स गडा को ता ना होची दवाई माने जोगडा का हमर मेडिसिन होची एलोपैथिक मेडिसिन ता ना हिंदी रे होची दवाई दबई दब पुणी सेटा पावर कमी गले पुणी रिवाइव करिवो पुणी ठंडा छाड़ी जीवो पुणी जदि कमी गले रेजिस्टेंस पावर कमिला पुणी अटैक करिवो 5 दिन पर तेणु आर सूक्ष्म जिनस जोटा कि अति माने किछि बिना पैसा रे जने जदि 5 पाखुडा रसुण सकाळ उठी खाइबो निश्चित भाव 100% मु ग्यारंटी दे कोची त लाइफ लॉन्ग ठंडा धरिबोनी एवं बीपी फीपी किछि धरिबोनी मु निजे भुक्तभोगी हला सो मो कोऑर्डिनेटर डॉक्टर दामोदर साहू भी मध्य एक कथा कहिथिली से मध्य सेटा एप्लीकेशन करूचंती हला सो दैट गार्लिक रो as a condiment it is used for flavoring and tomato ketchup sauce salad dressing meat sausage stew ए सब चटनी पिकल्स विभिन्न क्षेत्र रे गार्लिक ता व्यवहार होई थाए पिकल्स अचार हो चटनी हो आमे रसुण पकई करी व्यवहार करि थाउ सो गिंगर से भलिया अदार मध्य बहुत उपकारी डिहाइड्रेटेड ब्लीच्ड प्रोडक्ट मध्य करा जाई पारे सो मस्टर्ड ऑयल एंड पाउडर मस्टर्ड ऑयल रु मध्य सोरिष तेल रु मध्य विभिन्न प्रकार आइटम प्रोडक्शन होई थाए आमे आचार प्रिपरेशन करथाउ पिकल्स एंड चटनीज पिकल्स आचार मध्य प्रस्तुत करू पिकल ले कोन हुए पिकल्स आर पार्ट ऑफ इंडियन फूड हैबिटेट समस्त आचार खाଇବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି so we require spicy adjustment to make food palatable and enjoyable in and in this context pickle have gained importance in Indian menu जत्ते बड़ा होटल मोटेल को जाओ टिके आचार पाखरे थोई देथिवे preservation of fruits and vegetables in the form of pickles is an old art and a variety of these products are made in Indian home with something very special and specific to the taste of the people so हमें आचार प्रस्तुत करि परिबा गां गंडा अंचल रे घरई शिल्प रे इत्यादि रे रेगुलर हमें सप्लाई करि परिबा बाजार जदि टेस्टी पिकल्स हमें प्रिपेयर करि परिबा सो तापर गार्डनल ऑयल राइस कॉर्न फ्लेक्स सब तैयार हुए राइस कॉर्न फ्लेक्स बेकरी इंडस्ट्री बेकरी होची हमर विभिन्न प्रकार हमर पावरुटी इत्यादि वी in India have a lower per capita consumption of bread and bakery products in the world बहुत कम परिमाण रे हमर खर्च होई थाए बेकरी विभिन्न प्रकार रोटी ब्रेड पावरुटी सब प्रस्तुत करिबा पय so bakery industry in the small scale sector is labor intensive and it offers employment to a number of semi skilled and skilled workers such as small scale units can attract entrepreneurs to set up bakery and biscuits so that bakery units will go a long way to increase employment potential in rural areas and also raise nutritional standard among rural people the bakery industry plays an important role in integrating rural economy with urban economy in an agro based country like India food industry has acquired added importance in recent times with the government in intention to give a thrust to agro-based and village industry so that we can grow and develop the bakery industry. Bakery industry प्राय समस्तंकर आमर
दरकार पड़ता है आजिकल डायबिटीज पेशेंट माने विभिन्न अट्टार तैयारी होथिबा मैदा को छाड़ी दियो अट्टार मध्य आजिकल सब विभिन्न प्रकार ब्रेड सब तैयारी हेला जोटा के स्वास्थ्य पाई अति उपकारी होते तेणु एगुड़िक सब आम ध्यान देले निश्चित भाव में गाँ गंडे घर शिल्प भाव में अनेक शिल्प संस्था गढ़ी उठिब एवं परिवार समस्त पर कैपिटा मुंड पिछा वृद्धि पाई एवं देशर अर्थनैतिक मानदंड दृढ़ हो पार सो एम्प्लॉयमेंट इनक्रीज हो पार वृद्धि पाई पार सो पोल्ट्री इंडस्ट्री कुकुड़ा चाष विभिन्न प्रकार कुकुड़ा चाष सब करा जाउछि The National Commission of Agriculture states that poultry farming has certain special features which favor its large scale adoption of small and marginal farmers. Obviously, क्षुद्र चाषी एवं नाममात्र चाषी एमानंक पाई एवं जो माने सब बेकारी सब आजिकली देखा जाउचंती से माने आमे देखुचे पाउचंती वर्तमान जुग रे गाँ गंडा सहरांचल रे निश्चित भाव पोल्ट्री फार्म गोटे करि दउचंती प्रचुर लाभ होउची तादरु by small and marginal farmers and agricultural laborers also. Land required for poultry farming is very small. The capital investment for starting small poultry units is less. Poultry farming can be started on a small scale and can be expanded gradually. So poultry farming रे capital सेते दरकार पड़ी न थाए खूब कम capital ले धीरे धीरे जेतेबेले हमर इनकम बिजनेस जेतेबेले एक्सपांड करिवो so we can earn more and more profit we can expand for the long term purposes धीरे धीरे poultry farming रे बेसी किछि दरकार पड़ न थाए so also it does not require heavy investment and the raw materials are easily available also कौन से असुविधा न थाए some of the advantages of poultry keeping poultry farming रे केते गुडी बहुत एडवांटेज अछि कोन supplies nutritious food for the people secondly serves as a hobby and sports for some people. Thirdly, it requires less capital to start poultry unit and gives food and quick returns. Obviously, quick return आता है poultry farming रे. कुकुड़ा चाष कले बढ़ी गले मासे दि मास रे ताकू सेल कले. So आसी गला income. Needs little space and can be done in phase wise. Phase wise हमें production कर परिबा poultry. Water requirement is less as compared to crop production and dairy farming. Dairy farming बा अन्य चाषबास कला भली जेते जल दरकार पड़ी थाए एथरे से भलिया किछि नाही so waste product like bran and standard grains can be utilized जोड़ा waste product हम तब व्यवहार कर परिबा so eradicates garden pests such as caterpillars insect and snails अनेक कुकुड़ा चाष करा जाउची आजिकली गोटे कला कला कुकुड़ा जोड़ा चाष होची तार रेट बहुत तार ब्लड विभिन्न प्रकार दुरारोग्य को दूर करि थाए से सेटा की कुकुड़ा म मन पड़नी भूली जाउची कला कला कुकुड़ाटा तार रक्त तार चेहरा सब गुडी को कला ब्लड मध्य ब्लैक सर कड़कनाथ हां कड़कनाथ राइट कड़कनाथ कुकुड़ा तार रेट गोटा ना केते जानि छ ना मु बुझुतली माने 2000 3000 से कुकुड़ा गोटा रेट 2000 3000 कड़कनाथ जोड़ा धोनी चाष करूथला ना कोन हमर क्रिकेट प्लेयर धोनी कड़कनाथ रा बहुत डिमांड थाए अच्छा पोल्ट्री feeders are useful in many ways it is a favorable side business to agriculture also तार जो मल त्याग करछन्ती ताकू एवं रीयूटिलाइज हे परिबो एवं कुकुड़ा जो चाष होउची हमर आंध्र रे कोन होउची आंध्र केमति चाष होई जानि छ ना कुकुड़ा चाष सहित माछ चाष पोखरी ऊपर सब भाडी करा जाय थाए पोखरी ऊपर एते माने टेक्निक रे से माने तयारी करि थांती बड़ा बड़ा माने पोखरी ऊपर भाडी कुकुड़ा भाडी करा जाय थाए से जो मलगडा के पड़े से माने माछ ताकू व्यवहार करते सो बोथ माने कुकुड़ा चाष कले एवं मत्स्य चाष कले उभयरु से माने प्रॉफिट पारले so that is why supports many ancillary units some medicines and tonics are obtained from poultry as byproducts medicine मध्ये आदरु बाहरी थाए
So cottage and handicrafts industry, another type. Cottage industry are those industries run within the residence of the artisans and family members without any hired labor, with the use of locally available raw materials and by making little capital investment. The major industrial activities in this scheme include pot making, match making, घनी ऑयल एक्सट्रैक्शन, घना ऑयल जो गुड़ाक, बी कीपिंग, महू चाष, बांबो केन वर्क्स, जो बाउंस पातिया रे सब पतला पतला करी विभिन्न प्रकार बास्केट इत्यादि सब बैग सब तैयारी हुए, बास्केट मेकिंग, कोराई मैट वीविंग, स्टोन वीविंग आइटम्स, क्ले फॉग्स etc. So these are the items included in cottage and handicrafts. घरोई शिल्प, कुटीर शिल्प एवं हस्तकर्म रे इंडस्ट्री एगुड़ सब जाउछि. ऑयल इंडस्ट्री, द वेजिटेबल ऑयल्स आर एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ food needed for the growth and maintenance of human body. Crushing of oil seeds to obtain edible oil from human consumption has been an age-old village industry in India. को माने करी थांती गाय की जो बलद को घणा रे तेली तेली जो ऑयल मैन जो मान सब थांती तांकर कास्ट अनुसार से मान ही घणा माध्यम रे सब तेल गाँ गाँ रे सब पेड़ी थांती तेल सब पेड़ी थांती जो तेलटा की बहुत उपकार तेल से जो घणा तेल गुड़ाक. सो ए जो घणा तेल गुड़ाक ओरिजिनल तेल जोटा की हमर विभिन्न रोग मध्य व्याधि दूर करि थाए. आजिकली तेल अपमिश्रण हबारु कोन होछि माने अल्सर होछि, गैस्ट्रिक घरे घरे गैस्ट्रिक पेशेंट, डायबिटीज. दिस इज द ओनली रीजन we are consuming minerals and their food grains produced by the help of the by application of the chemical fertilizers, manures, pesticides, विभिन्न प्रकार DDT जो केमिकल सब व्यवहार होछि चाषबास रे एवं कृषि क्षेत्र मानकरे केवल सार विष कीटनाशक ही खाद्य शस्य उत्पादन होछि, जहाँ को वर्तमान घरे घरे आखि बुझी टेकाटी पकई दब समस्त गैस्ट्रिक आग एक नंबर कि 10 वर्ष 15 वर्ष पूर्व तो ये गाँ गंडार नथिला. गैस्ट्रिक गोटा कौन, डायबिटीज गोटा कौन मुझे शुण नी. एबे देखिबो घरे घरे बिकॉज दी जोड़ा मोर भेजाल तेल मुख्य कारण केते धरा पड़ुछन देखुथिबो. सो घणा तेलर जोटा तयारी होछि सेटा मेडिसिनल काम करथाय, ठंडा मध्य दूर करथाय. The village oil industries employs lakhs of artisans in rural areas. This industry renders service to the society in different ways. It is supplies fresh, flavored and nutritious oil to the consumers on the one hand and provides employment to the traditional artisans and other unemployed people. जो माने बेकारी थांती से मानकु मध्य नियुक्ति देई थाए एवं ट्रेडिशनल आर्टिसान माध्यम माने व्यवहार होती कारण समस्त एटा घणा माध्यम तेल प्रोडक्शन करि परिबेनी. जो माने स्किल्ड वर्कर्स से माने तार टेक्निक जानि से माने नियुक्ति पाई परिबे. सो एई भली पोटेरी एंड क्ले प्रोडक्ट्स सब अछि कादुरे सब विभिन्न प्रकार पुराना कालिया ट्रेडिशनल माने चित्र बा विभिन्न प्रकार आइटम सब प्रोडक्शन करी बिक्री करा जाय थाए. पोटेरी सेगडा कुआ जाय. The pottery is the traditional industry in rural areas, India. In fact, it is the old age industry where the pottery products are used within rural India and rural folks for cooking, handi and like matka and surei, and crockery, cutlery in the form of cooler, etc. The urban Indians using pottery products like plants, very special kitchen items made of china clay for serving tea and coffee clay bowls for preparing curds and serving food. आगे सब आमे सब कोन गाँ गंडा अंचल रे मु देखि छी जे माटी हांडी रे सब रोसे होतला. एबे जो सिल्वर व्यवहार हो जाउची सिल्वर रो जो बाहरुची जो केमिकल ता घसी घसी बारंबार खाइल तार मध्य पेट बेमार आउछ. कि आमर जो माटी हांडी रे आगे रोसे होतला
माटी हांडी रे आमे प्रिपरेशन कले खाद्य प्रस्तुत कले कोनसी रोग हेई न थाए वर्तमान एगुड़ा सब चेंज हो गलानी सो मोस्ट विलेजेस इन इंडिया हैव ए रेसिडेंस ऑफ पोटेरी कुम्हार जोड़ा कहते हैं कुम्हार who wheels out an amazing variety of household utensils and other products and having utility 100% utility he sits outside his horse spinning his wheel गोटे चक्र माध्यम घुरे 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 विभिन्न प्रकार माने बासन कुशन कतरु विभिन्न प्रकार हांडी माठिया सुरई सबु प्रोडक्शन करी थांती इन ए सीरीज ऑफ इंटरैक्टिव मीटिंग विथ पोटर्स टू नो अबाउट द various problems faced by them जो पोटर मान सब रहउछंती सेमानकर बहुत प्रकार समस्या घरोई समस्या स्वास्थ्यगत समस्या आर्थिक समस्या देखा जाता है तेणु सेटा तांकर जीविका द्वारा से संपूर्ण 100% साटिस्फैक्शन पाई पारि नथांती बिकॉज एपटरे गवर्नमेंट रो कोन सरकार प्रोत्साहन नाही and to educate them about alternative technology options to local potters we are told about the characteristics of the clay locally available several village and district level organizations are taking initiative to improve the quality of life of the potters with use of modern technology so repairs of phone and mobile एगुड़ा सब गला हमर village cottage industry ता व्यतीत आउरी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी किभଳି सृष्टि हे परिबो रिपेयर्स ऑफ फोन मोबाइल फोन इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल गुड्स वर्तमान जार चाहिदा हेवी डिमांड अछि रिपेयरिंग ऑफ फोन मोबाइल फोन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल गुड्स कंप्यूटर रेफ्रिजरेटर्स विभिन्न प्रकार हमर प्रोडक्ट गुडी को जोडा का डेली नेसेसिटी गडा सब हे गलानी मोबाइल फोन हो कंप्यूटर हो इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स हो घरे घरे हमें परिचित सो देयर इज हेवी डिमांड ऑन दिस प्रोडक्ट सो देयर इज रिपेयरिंग मस्ट इज नेसेसरी जदि किछि खराब हो गला हमर रिपेयरिंग ताको पुणी नूतन भाव रे ताको तयारी करबा निहाती दरकार पड़ी थाए with industrial growth and revolution in communication industry especially in the field of electronic media all over the rural India is also using television, radio, particularly for various FM stations available in local and regional language, capable network and landline and mobile phones. The various services providers have opened a range of self-employment opportunities and to rural educated youth who have the competence are willing to work to start their own enterprise in the area of service needs of rural India. So self-employment is particularly created in this repairing station by phone, mobile phone, electronics, self-employment. आत्मनियुक्ति बहुल परिमाण रे सृष्टि होता है self-employment oriented training programs to start an enterprise with a small investment are easily available to rural youth through various training institutes which do not require high level of educational qualification. It rather requires the necessary skill and basic aptitude to learn and understand the skill. जो रिपेयरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल फोन कंप्यूटर बा रेफ्रिजरेटर एठी से भली माने बहुल सर्टिफिकेट धारी ज्ञान दरकार नाही सिंपल स्किल गोटा होची कौशल कारीगरी कौशल तार एफिशिएंसी तार डिजायर टू वर्क विलिंगनेस टू वर्क ऊपर डिपेंड करी थाए सो एभली द्वारा हमर बहुल परिमाण रे अनएम्प्लॉयमेंट हमें अवॉइड करि परछंती वी आर क्रिएटिंग ह्यूज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन आवर कंट्री प्रति शहर गाँ गंडारे देखिबो रिपेयरिंग सेंटर अछि मोबाइल मिनिमम अंततपके मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर अछि केते युवक युवती माने सब नियुक्ति पाई पर इनकम करि परछन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हे परछन दिस एरिया कवर्स लार्ज नंबर ऑफ एक्टिविटीज इन रूरल इंडिया nowadays where youth can undertake the activities the tests this being a purely service oriented sector a person with good interpersonal relations and qualities will win over the business competition
सो एगुड़ा सब रिपेयरिंग केते एम्प्लॉयमेंट सृष्टि होची पॉवर्टी एराडिकेशन होची लोक मानकर इनकम स्टेटस बढ़ुची इत्यादि नेक्स्ट जिबा रूरल टूरिज्म टूरिज्म ऊपर केते कोन अछि सब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी सृष्टि होची इनकम बढ़ुची एवं अंचलर नाम ख्यात होची इत्यादि इंडिया इज वन ऑफ द oldest culturally richest and diverse country full of color and boast of civilization which with rich flora and fauna विभिन्न जाति प्रजाति रो वृक्ष एवं विभिन्न कलर रो full of country is colorful from the point of view nature our cuisines are mouth-watering since scenic beauty is breathing folk dances are simply enchanting and wide array of places of tourist attraction from the valleys of Himachal Pradesh, hill of Uttar Pradesh, plains of the river Ganga, forest of northeast or plateau of south India. In other words, India is simply full of diversity and that is why it is latest glitch of government terms are as incredible India. Incredible India. हमें वर्तमान कहउछंती भारत को nearly 2/3 Indians live in villages, more than 80% people. In fact, our roots are located in rural India. Moreover, most of the tourist sites are located away from the urban centers towards rural India and the trend is also shifted towards the rural areas. हमें जुआड़ देखी चंदी सहरांचल पाखापाखि किछि सेभली टूरिज्म प्लेस न थाए डिस्टेंस सहररु किछि डिस्टेंस कवर करी गले हमें पाइबा टूरिस्ट प्लेस गुडी को so that potential of rural tourism in India कोन आधर पोटेंशियल अछि so at the focus is shifting towards rural tourism as a global trend in India should also shift its focus for promotion of rural tourism. Most of our tourist destinations are located away from the urban centers and also showing increased numbers of tourists visiting places outside well-known as urban centers. So, certain state tourism corporations have also started accepting the concept of rural tourism such as that Rajasthan, Kerala, West Bengal, Punjab, Himachal Pradesh, Uttaranchal, Madhya Pradesh, Jharkhand and Chhattisgarh. In fact, some of these states have already developed or in the process of developing heritage village complex which is as nothing but a tilt towards rural India and they have identified the true potential of tourist attraction. So Suraj Kund, Craft Mela, New Delhi, Chaunki Dhani in Jaipur, Vishal in Ahmedabad, excellent step taken towards the identification of rural tourism. ये सब जगह विभिन्न प्रकार सब मेला महोत्सव हुए राजस्थान हो गुजरात हो मुंबई हो उत्तर प्रदेश एथरे कौन हुए विभिन्न प्रकार सब आमर ट्रेडिशनल हेरिटेज कल्चरल जिनस गुड़िक गुड्स कमोडिटीज होममेड गुड्स कमोडिटीज विक्रय होता है. So government is likely to take some step towards the development of rural tourism. So new tourism policy also aims at making the stay of foreign tourists in India. नुआ जो पॉलिसी करा जाउची विभिन्न योजना समय रे जे विदेशी लोक माने किभली अधिक अट्रैक्शन हेबे काहे कि ना tourism provides ample opportunity for the government to increase the foreign level of foreign exchange. वैदेशिक मुद्रा अर्जन करा जाइथा है फॉरेन कंट्री सपोज अमेरिका रो डॉलर ब्रिटेन रो पाउंड स्टर्लिंग जापान रो येन इटाली रो लीरा जो देश मन रखिता इंटरनेशनली द कंट्री इज रिच इफ the country possesses huge deposit of foreign currency. जो देश रे प्रचुर परिमाण रे वैदेशिक मुद्रा गच्छित थाए से देश यथेष्ट उन्नत देश बोली कहा जाए.
because by the help of the foreign currency we can clear the balance of payment in foreign exchange. आमे balance of payment जोटा अछि बफ सिस्टम तक आ जाए at the international trade we can clear it. वैदेशिक जो देण नेण आदान प्रदान जोटा कहती ताको आ जाए balance of payment. For example आमे अमेरिका रु केते इंडस्ट्रियल गुड्स इंपोर्ट कलु हला केते क्वांटिटी रो बा केते डॉलर रो आमे इंपोर्ट कलु अमेरिका रु सपोज भारत केते मेडिसिनल आइटम बा खाद्य सामग्री एक्सपोर्ट कला अमेरिका को ऑब्वियसली तांकर मेडिसिन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट गुडी कर कॉस्ट होची अधिका भारत सप्लाई करूची फूड ग्रेन आइटम्स मेडिसिनल आइटम जार कॉस्ट होची मिनिमम तेणु करी एठी देण नेण कोन ना भारत अमेरिका रु आनिथिबारु अधिका वैल्यूबल जिंस हमको डॉलर पेमेंट करिवार अछि सो इंडिया नाउ रेडी टू पे टू यूएसए इन टर्म्स ऑफ डॉलर आसीबो कोठु जदि आमे एक्सपोर्ट करि परिबा विभिन्न गुड्स कमोडिटी जते एक्सपोर्ट करिवो जो देश मन रखिता जते एक्सपोर्ट करिवो इफ export is greater than import the country is a rich country and earns sufficient foreign exchange export greater than import e greater than I जदि हबो ता से देश अधिका धनशाली हबो जदि बारंबार आमे विदेश रु खाली इंपोर्ट करूथिबा आमदानी करूथिबा ताले आमे खाली खर्चांत ही चलीबा लाभटा सेमाने नेबे एवं फॉरेन एक्सचेंज को आमे गणिबा सो कंट्री रो इकोनॉमिक टा वीक ही जाए तेणु बैलेंस ऑफ पेमेंट क्लियर करिया पई एट द इंटरनेशनल ट्रेड लेवल वी शुड एक्सपोर्ट मोर एंड मोर सेति पई हमरो ग्राम्य शिल्पीकरण बा रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन पर सरकार बहुत गुरुत्व दउछथि स्मॉल स्केल हैंडीक्राफ्ट्स कॉटेज इंडस्ट्री इत्यादि ऊपर द कांसेप्ट ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री टूरिज्म जदि आसिले अधिका ऑब्वियसली हमें वी कैन अर्न मैक्सिमम फॉरेन एक्सचेंज से माने कारण से माने टूरिस्ट माने आसिले आम देश विभिन्न प्रकार कॉटेज इंडस्ट्री प्रोडक्ट गुडी को से माने परचेज करिवे पुरी कोणार्क बेलाभूमि जते टूरिस्ट आछन विदेश रु से माने ओडिसा रो विभिन्न होममेड प्रोडक्ट गुडी को कॉटेज इंडस्ट्री प्रोडक्ट गुडी को किनि किनि नेउछन तांग देश को सो हमें पाउछ इंडियन करेंसी जदि बा एक्सचेंज हे जाउछ ऑटोमेटिकली हला से माने एक्सचेंज करी करी आसुचंती बाय आरडीए डिपार्टमेंट रुपी ड्राइंग अथॉरिटी जो अछि रिजर्व बैंक माध्यम रे से माने एक्सचेंज करके आसुचंती सो द मेन एम ऑफ सच प्रमोशनल एक्टिविटी रूरल टूरिज्म इज टू अचीव इनकम क्रिएशन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी and equality and above all infrastructural development of rural India. And besides such activities help in making India to national and international tourists who have liking towards rural tourism with urban services. So specific areas and centers were identified as potential areas of rural tourist. को गुडा सब आइडेंटिफिकेशन करा जिवो पोटेंशियलिटी अच्छी रूरल टूरिज्म पाई दी हेरिटेज ऑफ राजस्थान इंडिया कथा हमें डिस्कशन करछन जेते राजप्रसाद ता ना होची राजस्थान काहे की राजस्थान रे बहु अच्छी माने टूरिज्म प्लेस बहु सुंदर कारुकार्य राजस्थान अछि मूल्यवान कारुकार्य सब को जुगर कारुकार्य सब सो राजा मानकर स्थान जोटा सेटा हला राजस्थान तनो महा जेते प्रकार सब राजा थिले प्राय राजस्थान सब थिले ताकर जो राजप्रसाद महल सब करि जाइचंती सेगडा ही ताकर प्रचुर परिमाण रे राजस्थान सरकार माने इनकम करि थांती सो द हेरिटेज ऑफ राजस्थान इज इंटरनेशनल फेमस द गिर फॉरेस्ट इन गुजरात रे गिर फॉरेस्ट मध्य फेमस द बैक वाटर्स ऑफ केरल द पंजाबी क्विसिन उत्तरांचल द शांति निकेतन इन वेस्ट बेंगल ये सब होची टूरिज्म प्लेस गुड़िक द डांस एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ ओडिशा ओडिशा जो ओडिसी नृत्य अन्य जो नृत्य एवं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सब अच्छी ता मध्य इंटरनेशनल फेमस द नृत्यग्राम ऑफ कर्नाटक द ट्राइबल्स ऑफ बिहार
Bihar tribal people international famous. The scenic beauty of Meghalaya, the folk dance of Andhra Pradesh and many more. এইଭଳି କେତେ ଯେ ଅଛି ସବୁ ଟୁରିଜିମ ପାଇଁ ହିସାବ ବାହାରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଆମକୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଗ୍ରୋଥ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। So apart from this, that the entertainment is also there. In the absence of leisure time, as well as purchasing power, the rural folks are generally devoid of the entertainment which everyone needs for rest and relaxation. Relaxation এবং rest ପାଇଁ ସବୁ ଲୋକ ଚାହିଁଥାନ୍ତି। With the reach of electronic media, the rural youth has developed a taste towards music, dance and acting, etc. In addition to traditional songs, folk dances, cultural activities, traditional games and sports which can be used as source of revenue generation. This type of service can be provided either by an individual having good financial background or by a small group rendering and promoting such activities, services in rural India on various occasions such as social functions, VIP visits, etc. Such events are attracting not only the domestic tourists but international tourists. So এই ସବୁ entertainment ପାଇଁ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନୃତ୍ୟ ଢଙ୍ଗ ଏବଂ ଯୋଉଟା କଲଚରାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି ମଧ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଉ ସଭା ସମିତି ହୁଏ ତା ଦେହରୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ରୋଜଗାର କରିଥାନ୍ତି। ଯୋଉ ଦାଣ୍ଡିଆ ନୃତ୍ୟ ହଉ ବା କେନ୍ଦୁଝର ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଆମର ଯୋଉ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଅଛି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ତାପରେ ଢାଙ୍ଗରା ନୃତ୍ୟ କେନ୍ଦୁଝରର ଆଦିବାସୀ ମାନେ ଯୋଉ ପରିବେଷଣ କରି ମୁଣ୍ଡରେ କଳସୀ ଦେଇକିରି ଯୋଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱର ଲୟରେ ସେମାନେ ଯୋଉ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିଥାନ୍ତି ତା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପ୍ରଚୁର ଆୟ କରିଥାନ୍ତି। ସୋ ଏଇଭଳି ଅନେକ ପ୍ରକାର ଆମର ଇନକମ୍ ସୋର୍ସ ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳରେ ରୁରାଲ ଏରିଆରେ ଆମକୁ ଅପରଚୁନିଟି ସବୁ ମିଳିଥାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ଆମେ ଆମର ରୁରାଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍କିଲ୍ କଳା କୌଶଳ ଏବଂ ଏଫିସିଏନ୍ସି ଦକ୍ଷତା ଆମେ ବିକାଶ କରିପାରିବା। ଏହାଦ୍ୱାରା ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମର ବିକାଶ ହେଇପାରିବ, ଲୋକମାନଙ୍କର ପରିବାରର ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରିବ। ଯଦି ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କର ଇନକମ୍ ବଢିବ, the whole family income will grow automatically. family income ଯଦି ବଢିଲା ଗାଁରେ ବହୁ ଲୋକଙ୍କର ଇନକମ୍ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଲୋକମାନଙ୍କର ଇନକମ୍ ବଢିବ। ସୋ ସେ ଗାଁଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିତ୍ତଶାଳୀ ଗାଁ ଭାବରେ ପରିଚିତ ହବ। ସୋ ଗାଁ ମାନଙ୍କର ଯଦି ବୃଦ୍ଧି ହେଲା ତାହେଲେ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ଦେଶର ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ସୋ this is the rural initiative in which the new generation is not taken to take up as a career ଭାବରେ ଯୋଉ ଆମର ନୂଆ ଜେନେରେସନ ଆ ଉପରେ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉନାହାନ୍ତି। ଯିଏ ଯିବା ପାଠ ପଢିବା, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପାଠ ପଢିବା ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାଠ ପଢିବା ଏବଂ ସର୍ଭିସ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ହବା। ସେଲ୍ଫ ରିଲିଆନ୍ସ, ସେଲ୍ଫ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ, ସ୍ୱାବଲମ୍ବନଶୀଳତା ହବା ପାଇଁ ନିଜର ଏଫିସିଏନ୍ସି ଫୋକସ ପଏଣ୍ଟ ଡ୍ରିମ୍ ସେଟ୍ କରାଯାଇନ ଲୋକମାନେ ଆଜିକାଲି ପିଲାମାନେ ସବୁ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କଲେ we are moving towards a job and ଯଦି ନ ପାଇଲେ ତାହେଲେ କଣ ହଉଛି ନା ଗ୍ରିଫ, ଡେସ୍ପେୟାର, ପେନ୍। ଆଜିକାଲି କଣ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ that after completion of the education, career completion, if any youth will unable to get the employment opportunity at the prevailing wage, he is titled as the unemployed people. unemployed କାହା କହନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ବା ବେକାରୀ କାହା କହନ୍ତି? ଯିଏ କି ବାସ୍ତବରେ ଯିଏ କି ପ୍ରଚଳିତ ମଜୁରୀରେ କୋଉଠାରେ ସେ କାମଧନ୍ଦା ପାଇନଥାଏ। ପ୍ରଚଳିତ ମଜୁରୀ ହାରରେ ସପୋଜ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ମୁଁ ଦଉଛି, ଯାହା ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରିଭାଇଲିଂ ୱେଜ ଅଛି, ସପୋଜ ସ୍କିଲ୍ଡ ଲେବର କୁଶଳୀ କାରିଗର 350 ଟଙ୍କା ପାଇବ ପର ଡେ, ଅଣକୁଶଳୀ 300 ଟଙ୍କା ପାଇବ, ବା ଏଜୁକେଟେଡ ଅନଏମ୍ପ୍ଲଏଡ ସେ ପାଇବ ସପୋଜ 500। if at the prevailing wage rate one youth if unable to get the
employment opportunity is titled as the unemployment. बेकारी आमे काहा को कहउचंती एकदम बेकारी कथा पढिलेनी एते बेकारी विषय रे आलोचना कलेनी ताले बेकारी काहा कहबा जे चाकरी बा वृत्ति न पाए सिंपली आमे साधारण कथा रे बुझिबा जे सेवा वृत्ति न पाई थाए सो एक्चुअली कोन फ्रॉम द इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू at the prevailing wage rate if one educated or skilled worker unable to get the employment opportunity we can title as he is unemployed जदि से माने से जो प्रचलित मजूरी अछि आम देश रे बा राज्य रे जदि आमे न पाइले हमर क्वालिफिकेशन अनुसार ताल आमे बेकारी हेकरी बसिले जने बेकारी run in grief, despair and pain. नैराश्य हताश जंत्रणा रे गति करि थाए ता जीवन सो ऑटोमेटिकली जदि यंग मास अनएम्प्लॉयमेंट हेले बेकारी हेले कोठारे जॉब अपॉर्चुनिटी पाइले नाही सो दे आर गोइंग टू इन्वॉल्व इन एंटी सोशल एक्टिविटीज केते बेकारी देखो विभिन्न प्रकार एंटी सोशल एक्टिविटी रे इन्वॉल्व होउछन न्यूज रे डेली प्राय देखुथिबो विभिन्न माओइस्ट टेररिज्म विभिन्न एक्टिविटी रे इन्वॉल्वमेंट होउछन चोरी डकायत लुंठन रे इन्वॉल्वमेंट होउछन बिकॉज़ दे आर नॉट एबल टू आर गेटिंग एनी अपॉर्चुनिटी जॉब अपॉर्चुनिटी एट द प्रिवाइलिंग वेज रेट सो विभिन्न प्रकार एम्प्लॉयमेंट अछि ता भितरे सीजनल एम्प्लॉयमेंट अछि इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट अछि तापरे साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट अछि विभिन्न प्रकार बेकारी सब अछि ऋतुगत बेकारी जोटा कि 6 मास काम कला परे आउ 6 मास बसी रहउचंती जे माने चासी माने होंतु बा स्किल्ड वर्कर होंतु संपूर्ण पई काम धंदा पाउ नांती सेति पई हम कहै जाई छी दैट if government will provide opportunity to the rural areas for beekeeping allied activities गो पालन करिबा मेष पालन करिबा एवं पोल्ट्री चाष करिबा एवं छेली पालन करिबा मौमाछी चाष करिबा टसर चाष करिबा दिस प्रोवाइड द इनकम सोर्स थ्रू आउट द ईयर वर्ष तमाम जोगैबो तो से भली अपॉर्चुनिटी हमर सब अछि बट ड्यू टू डिफेक्टिव प्लान जो डिफेक्टिव योजना सब होउची करप्शन ए दीटा सृष्टि के खाई दउची तार अपॉर्चुनिटी केही पाउ ना दे जदि बा दरकार पड़ी थाए जने चासी पाई से सुविधा पाई न थाए खाली नाम को मात्र सैंक्शन हो जिवो सेटा कुआडा हड़प हो जिवो डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए ऊपर टू ऊपर लेवल ग्रास रूट लेवल पर्यंत आ लोक माने पाइबे कोठ सो दिस इज द प्रॉब्लम as prevails in our country how to eradicate the poverty and unemployment from our country that depends on the politicians the administrator bureaucrats ultimately depends on the awareness of the people or citizens in our country so that's all today in my counseling part what we discuss about the rural industry. So tomorrow, next we'll counsel or discuss about the other topic tomorrow. I marked a full stop here in my counseling part today. Okay, thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you to all. Thank you to all. Okay. Yeah. Oh, it is dying. Oh, it's going on. I can't even do it. धीरे मारा धीरे आके धीरे मारे इतना है ना हाँ चालीस जमा जानना आपको ओ